Good afternoon, Apple Harsan. Welcome back to the class of Marketing Specialization. The subject is Sales, Distribution and Logistics Management. Sales, Distribution and Logistics Management. Okay, so पिछली क्लास में अपन ने सेकेंड क्लास यूनिट पढ़ी थी आपकी रिगार्डिंग द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. ओके, देयर आर डिफरेंट, वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसीज. So we have studied about what is the best method of selecting a particular channel, what type of channel we should use for the distribution. Okay, now we are on to the last module of sales distribution, that is the physical distribution management. वो अपन ने बात की थी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो क्या थे, वो थे मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स. ओके, द चैनल or the stages through which the goods manufactured by the producer reaches the final consumer. ठीक है, अब ये तो हो गया from the channel point of view. ठीक है, now how the goods from the manufacturer reaches these different marketing intermediates and finally to the consumer. ठीक है, तो जब हम उसकी बात करते हैं that is known as the physical distribution management. So this is the difference between the channel distribution and the physical distribution. Channel distribution includes the stages or the places through which the product passes from the manufacturer or producer to the final consumer. ठीक है, so the channel distribution management is where, it is a where or by whom. Okay, so where the goods are available, it is available with the retailer, distributor, wholesaler, agency, CNF agent. Okay, so it answers where, okay, and by whom. While the physical distribution management includes how the goods are transferred from one intermediary to the other. Okay, so this is the difference between the channel distribution management and the physical distribution management. Okay, so the simple definition, simple meaning of physical distribution management is, it is the movement of product from the place of manufacturing to the place of consumption. Okay, so it is the movement of the product from the place of manufacturing to the place of the consumption. ठीक है, जहां से माल बन रहा है वहां से उसको जहां पर वो फाइनल कंज्यूमर्स तक जिस स्थान पर उसको पहुंचाना है, ठीक है, दैट मेथड is known as the
physical distribution. Okay, and that management is known as the physical distribution management. Okay, so how the goods from the producer are supplied to the final consumer. Okay, the method used is known as the physical distribution, and that management is known as the physical distribution management. Okay, now we'll discuss some of the components, some of the essential components or the methods or the parts of the physical distribution management. Okay, so first one is the transportation. First one is the transportation of products. Transportation of products. So, as the name suggests, it is quite simple. Transportation मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसको चाहे हम होलसेलर की बात कर रहे हैं, होलसेलर से रिटेलर तक एंड रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर. So this is the chain we have discussed in the channel of distribution or the marketing intermediaries. Okay, तो यही chain अपन ने discuss की थी. Now this is not physical distribution. Okay, physical distribution क्या है कि manufacturer से ये जो चीज है, ठीक है, this is the channel, this is the channel, ठीक है, and this thing is known as physical distribution. How the products from one stage, इसको अपन एक stage मान लेते हैं, is transferred to the another state and similarly to the final consumer. ठीक है, अंतिम पंक्ति का जो उपभोक्ता है उस तक किस तरह से माल को पहुंचाया जा रहा है. ठीक है, तो उसके कंपोनेंट जो है, सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पर किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए माल को पहुंचाया जा रहा है, और होलसेलर से रिटेलर तक किस प्रक्रिया को, किस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करते हुए पहुंचाया जा रहा है, और रिटेलर से किस तरह से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है. दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो अपन अगर चैनल्स की बात नहीं करें तो किस तरह से फिजिकली जो प्रोडक्ट है, गुड्स हैं, उनको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है, दैट इज नोन एज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. Okay, this is done through various channels but by the components of the physical distribution. Okay, by the components of the physical distribution. So first is transportation. Transportation बहुत आसान है. It is refers to the physical movement of the goods from place where they are manufactured to place where they are consumed. To make the goods physically available to the consumer, they must be transported from the place of production to the place of consumption. जहाँ से माल बन रहा है, the place from where the product is manufactured to the place where it is consumed, that is the final market. You can say the retailers or the wholesalers, from where the goods are purchased by the final consumer. ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत तरीके से हो सकता है.
So these are the three basic modes of transportation or carriage of products from the producer or the manufacturer to the final consumer. Okay, when the roads are utilized or the road network is utilized for transporting the goods from one place to another or from producer to the final consumer, then it is known as land transportation. When the goods are heavy or the distance between the manufacturer and the final consumer is very large. Okay, if the distance is small, then it can be transported with the help of the land transportation, but if the distance is very large, then air and sea transportation. And the kind of goods, okay, the kind of goods that are to be transported from the manufacturer to the consumer, that also decides the mode of transportation. So when it is transported with the help of the air activities, then it is known as the air transportation. When sea is utilized or with the water medium, the goods are transported generally from one country to another. Okay, that is known as shipping carriage. That is known as shipping carriage. Okay. So these are generally used when the distance between the producer and the final consumer is very large. Okay. So these three are the basic types of the transportation of products. Okay. Next is the warehousing. This is also a very important method of physical distribution, okay, or management of physical distribution. Warehousing, okay. It is a kind of storage, okay, it is a kind of storage of the goods before the final act of sale. If a company has larger number of warehouse, it will be able to readily provide the goods on time at different locations. However, where maintaining warehouse includes its own cost, thus a company must weigh the relative benefits and cost associated with warehousing and maintaining a balance between the two as per the requirement. Now, प्रोडक्शन जो होता है उसका एक शेड्यूल होता है, ठीक है. एवरी कंपनी मेंटेन्स अ प्रोडक्शन शेड्यूल, ठीक है. व्हाइल द डिमांड इज इनकंसिस्टेंट, डिमांड फॉर द गुड्स इज इनकंसिस्टेंट, वेदर इट इज वेरी हाई एट टाइम्स बट इट इज नॉट वेरी हाई एट टाइम्स. ओके, सो द डिमांड जो होती है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है. तो उन सिचुएशंस में भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, उसकी स्टोरेज की जाती है, ठीक है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेयर हाउसेज बाय बिग कंपनीज हैव लार्ज नंबर ऑफ वेयर हाउसेज वेयर दे आर एबल टू स्टोर द फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम which through which it reaches the final consumer, ठीक है. So warehousing is an activity of storing the final goods, final products of the company or the business enterprises, whether until it before the act of sale, मतलब कि जब तक वो बिक नहीं जाते हैं या तो होलसेलर द्वारा या रिटेलर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर तक वो नहीं पहुंचते हैं, तब तक इनकंसिस्टेंट डिमांड जो होती है उसको
भरपाई करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए दिस फैसिलिटी इज यूटिलाइज, ठीक है, बिकॉज द प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो एक कंसिस्टेंट वे में चले, ठीक है। तो जो कभी ऐसा हो कि डिमांड ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, तो उसको वेयर हाउस में रखा जा सकता है एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन देयर इज अ डिमांड। प्लस कभी ऐसा हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सो एक्सेस प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको भी वेयर हाउस में सेफ रखा जा सकता है, ठीक है, बिफोर दे आर एक्चुअली परचेज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। ओके, सो द सेकेंड important component of the physical distribution management is the warehousing, okay।